Hello, students. Welcome to the NCERT Line by Line series of Vigyalaya. So, we are starting with the first chapter of class 11 biology, and the chapter is The Living World. So, let's get started. The living world. How wonderful is the living world? The wide range of living types is amazing. The extraordinary habitats in which we find living organisms, be it cold mountains, deciduous forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. So in this para, in this line, they have talked about the कि हमारा जो habitat है वो कितना diverse. Okay. Next line. The beauty of galloping horse, of the migrating bird, the valley of flowers, or the attacking shark evokes awe and a deep sense of wonder. तो मतलब यहाँ पे they have talked about the diversity or of the animals that we have, and not only animals, the organisms. Like plants are also mentioned here, right? Then the ecological conflict and cooperation among members of the population and among population of a community or even the molecular traffic inside a cell makes us deeply reflect on what indeed life is. So, what we have studied so far in these three lines, the most important part is this. Let me just underline. This is members of a population. Let me just write members of population. Okay, and then it says population of a community. So from here we can tell that a population consists of many members, right? Like population, human population, which means the number of humans, a number of humans form a population. Elephant population, the number of elephants form a population. So population is made up of a single type of organism only, either humans or elephants or bacteria or plants, a single type. And a population of a community, which means that a community is made up of population of organisms. So पहले आता है individual, group of individuals will form similar individuals will form a population, and then the different population like human population, elephant population, tiger population, leopard population, they will together form a community, right? So this is what we are talking about here. यहाँ से क्वेश्चन बनने जैसा एक ही ये लाइन है, ठीक है? But this you will study even you know even more in class 12. Last two chapters है वहाँ. Okay. Next, the question has two implicit questions within it. कौन सा question? ये what indeed is life. उसके अंदर दो और question है. What are those two questions? Two questions है which are mentioned here. This says कि एक तो philosophical question है which asks कि purpose क्या है हमारे life का. And the second one is how do we differentiate between the living and the non-living. So main question जो हमें study करना है as biology students is what is living. So differentiation between living and non-living. You have studied in your lower classes that living organisms have many processes undergoing inside them, which is and the most important are metabolism. Metabolism is important. Apart from that, they grow, they show some kind of movement. All these things are important, and also they reproduce. Right. So these are important for an organism to be called living. Right? Now, 1.1 diversity in the living world. If you look around, you will see a large variety of organisms, be it potted plants, insects, birds, your pets, or other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. So they are talking about different type of organisms we see around ourselves. ये इतना important यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है. I mean from exam point of view, right? So क्या important है? ये वाला line. If you try to increase the area that you make your observation in, the range and variety of organism that you see would increase. So what does it mean? Let us see. एक ये जगह है जहाँ पे different type of organisms है. तो हम लोग स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, सर्कल से, डॉट से, डिफरेंट टाइप से. तो अगर मेरा ऑब्जर्वेशन का एरिया इतना है, ये जो स्क्वायर है, तो here I can find only two types of organisms, right? पर अगर मैंने ये एरिया को इंक्रीज कर लिया एंड मैंने अब इतना देखने लगी मैं, then I can here find one square, one circle, one dot and one triangle. Three type of organisms, right?
sorry, four types of organisms are present. तो ये वही कह रहे हैं कि if we increase the area जहाँ पे we are making observations, then the range and variety of organisms will also increase, right? Then, obviously, if you were to visit a dense forest, you will probably find a much greater number and kinds of living organism in it, right? Forest में बस organisms ही है तो वहाँ पे we will find much greater and higher biodiversity. But each different kind of plant, animal, or organism that you see represent a species. Now, this is important. What are species? एक एक particular type का organism that we see represents a species. चाहे वो plant हो, animal हो या कोई भी और organism हो, they will represent a species. कैसा? एक particular type का होना चाहिए. ऐसा नहीं कि lion और elephant they are same species. No, elephant is a different species, lion is a different species. So the number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. इतने species है, different types of species है. This refers to biodiversity और इसको biodiversity कहते हैं या फिर biodiversity की एक और definition क्या है? और the number and type of organism present on Earth. The number and type of organism present on Earth is known as biodiversity. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. Obviously, new areas जितने देखेंगे या फिर old areas में भी इतने suppose bacteria, so सोचो कितने छोटे छोटे होते हैं. So they are often missed when we explore an area. Okay, some of them are found, some of them are missed. So when we explore the same area or we go to a new area, then we will find those organisms which were not previously described or which were not previously found, right? Next is, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know that plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place even within a country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we do not find ways and means to talk to each other or to refer to organisms we are talking about. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि we need a standard name for organisms. Why? क्योंकि I am from Bengal, so मेरे यहाँ पे West Bengal, so मेरे यहाँ पे भिंडी को कहते हैं ढैंढ़स. So if I say ढैंढ़स, most of you who are non-Bengalis, they will not understand, right? But if I say lady finger, then you will all understand because we all know English. But if I say the same term to a person who does not know English, suppose a Portuguese or a Spanish person, they do not know English, then it will be difficult for them. So we have to arrive at a common term which is recognizable, which is identifiable, which is understandable by everyone. And there comes the need for a standard naming procedure, right? So standard names are important so that everyone in the entire world can understand कि अच्छा ये particular नाम है मतलब इसी organism के बारे में बात हो रही है कोई दूसरा organism नहीं है, right? So hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world, right? जो अभी हमने डिस्कस किया और ये जो प्रोसेस है where we are naming the organism by one name all over the world, this is known as nomenclature. Nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. और इस प्रोसेस को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन. दिस इज कॉल्ड एज आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब हुआ? वेर वी नो कि ये ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड भी है करेक्टली एंड हमको पता है कि ये नाम से हम कौन सा ऑर्गेनिज्म को रेफर कर रहे हैं, उसको कहेंगे आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, तो नेमिंग हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया. फिर क्या कह रहे हैं? इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism. This is acceptable to biologists all over the world.
तो यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस है, ये जो नेमिंग करनी है हमको एक स्टैंडर्ड नेम, इसको रखने के लिए, नाम रखने के लिए वी हैव डेवलप सम प्रोसीजर्स, ठीक है। वरना क्या नाम रखें हर बार कि सबको सही लगे, है ना। सो देयर आर सम प्रोसीजर्स, क्या है? For plants, scientific names are based on agreed principles and criteria which are provided in, where are they provided? In the International Code of Botanical Nomenclature. This is important, very, very important. Hard mark. So the criteria for naming plants is written in where? This is a code. This is a code like a set of rules. What is it called? International Code of Botanical Nomenclature, ICBN. ठीक है। एंड व्हाट अबाउट एनिमल्स? एनिमल्स के लिए हमारे पास एक दूसरा कोड है विच इज नोन एज इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICZN। साइंटिफिक नेम्स, तो उनके लिए ICBN वी हैव, एंड एनिमल्स के लिए वी हैव ICZN, ठीक है। द साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, okay. The scientific names ensure that each organism has only one name. Description of any organism should enable the person in any part of the world to arrive at the same name. इसीलिए हम लोग स्टैंडर्ड नेमिंग करते हैं. They also ensure that such a name has not been used फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म सो फार। मतलब अगर किसी न्यू ऑर्गेनिज्म को नेमिंग करनी है तो हम लोग पहले तो ये रूल्स फॉलो करने होंगे, देन रूल्स फॉलो करके नेम हमने रखा, देन वी हैव टू चेक कि अच्छा ये जो नेम हम रख रहे हैं ये नेम किसी और ऑर्गेनिज्म का तो नहीं है। डेटाबेस में वो सर्च करके फिर हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है, राइट। इसके बाद आता है biologists follow universally accepted principles to provide scientific names to known organisms. Each name has two components. अब देखो हम लोग आ रहे हैं एक सिस्टम ऑफ नेमिंग के बारे में डिस्क्राइब करने वाले हैं जो वाइडली यूज किया जाता है इन टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड फॉर नेमिंग ऑर्गेनिजम्स। और ये जो सिस्टम है इसको कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था फर्स्ट टाइम इसको? इसको दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा। कैरोलस लीनियस एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोलॉजिस्ट थे, उनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं और उन्होंने अपने ही पब्लिश किए हुए वर्क में ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम है इसको उन्होंने दिया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई विल हाईली सजेस्ट यू कि आप जब व्हेन यू आर अटेंडिंग द लेक्चर्स प्लीज कीप योर एनसीईआरटी विद योरसेल्फ, ठीक है। जैसे ही यू आर स्टडिंग प्लीज अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट टर्म्स और बुक के पास ये जो एरिया है आपका खाली एरिया वहां पे आप छोटे छोटे नोट्स बनाते रहो। जो भी आप यहाँ से सीख रहे हो रनिंग नोट्स यहाँ पे छोटे छोटे लिखते रहो, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है कि बुक में नहीं है या फिर ये मैं लिख लेता हूँ या लिख लेती हूँ तो आई विल अंडरस्टैंड बेटर व्हेन आई रीड द सेकंड टाइम। तो वो आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है? इसमें क्या होता है हर एक नेम का दो कंपोनेंट है, वन इज जेनेरिक नेम एंड द अदर वन इज स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। तो दो टर्म्स है, एक जेनेरिक नेम होगा एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा, ठीक है। और इसको दिया गया था कैरोलस लीनियस के द्वारा, ठीक है। और अभी इसको द एंटायर वर्ल्ड इज फॉलोइंग दीज द रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय कैरोलस लीनियस टू फॉर्म बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। Thus, naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific names better. ठीक है, मैंगो का एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। मैंगो का साइंटिफिक नेम इज मैंगीफेरा इंडिका, इट इज मैंगीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम। बाइनोमियल नेम कैसे है हम देखते हैं। In this name, Mangifera represents the genus, while Indica is a particular species. तो देखो मैंगीफेरा यहाँ पे आएगा बिकॉज इट इज अ जीनस नेम, एंड ये जो इंडिका है दिस विल कम हियर बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक epithet, ठीक है। अदर यूनिवर्सल देखो मैंगीफेरा इंडिका जीनस नेम स्पेसिफिक एपिथेट याद रखना, थोड़ी देर बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट तो क्या मतलब है, ठीक है। अदर यूनिवर्सल नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या क्या है? फर्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, लैटिन में लिखा जाता है, दे आर लैटिन और उसको हम लोग लैटिनाइज कर देते हैं, ठीक है।
अगर वो लैटिन में है वेरी गुड, अगर लैटिन में नहीं है देन वी आइदर डिराइव इट फ्रॉम लैटिन वर्ड और वी लैटिनाइज इट। ठीक है, चाहे कहीं से भी हो, इंडियन कोई नेम हो तो उसको भी हम लोग लैटिनाइज कर देंगे ऐसा। और उसको कैसे लिखेंगे, वी विल राइट इट, ताकि उसका लैटिन ओरिजिन पता चले, वी विल राइट इट इन इटैलिक्स। अगर हैंड रिटन है इट विल बी रिटन इन इटैलिक्स। इफ इट इज प्रिंटेड, sorry, if it is printed then it will be in italics. If it is handwritten then it will be underlined separately। मतलब मैंगीफेरा को अलग से अंडरलाइन करना है, इंडिका को अलग से, मैंगीफेरा को अलग से, इंडिका को अलग से, ऐसा नहीं कि दोनों को साथ में अंडरलाइन करेंगे, राइट। एंड एक्चुअली आप लोग जब साइंटिफिक नेम्स लिखोगे, इफ यू डू नॉट अंडरलाइन देन योर मार्क्स माइट बी डिडक्टेड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस आल्सो। Then the first word in a biological name represents the genus, while the second word denotes the specific epithet. Genus, specific epithet. Very good. When the first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with a small letter. देखो यहाँ पे मैंगीफेरा कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है एंड इंडिका इज स्टार्टिंग विद अ स्मॉल लेटर। Sorry, I lost it. Wait, one second. Here. Yeah. Name of the author appears after the specific epithet। मतलब अगर मोस्टली ऑथर के नेम हम लोग मेंशन नहीं करते, बट इफ यू वांट टू मेंशन द नेम ऑफ द ऑथर देन इट विल कम आफ्टर द स्पेसिफिक epithet। जैसे कि मेंगिफेरा, इंडिका, फिर लिन। लिन मतलब लीनियस, लीनियस ने उसको इन्वेंट किया था, सॉरी डिस्कवर किया था या फिर नेम किया था, तो फिर इसलिए लीनियस का नाम उसके बाद में आएगा आफ्टर द स्पेसिफिक epithet। ठीक है, it indicates that the species was first described by Linnaeus। Okay, so this is the first lecture, we will continue further from here in the second lecture।